Hello everyone, welcome to Infomercial. I think it's high time you must ace your presentation skills. So let's begin with our today's session. Before we start, we must know what is presentation. So presentation is also known as public speaking, which deals with a particular topic and one person or two together or more than two persons can present the presentation, and the purpose to deliver presentation on any particular topic is to entertain, is to give information, is to persuade the audience. Now here the question arises, why presentation skill is very much important, and whenever we go for the interview, the interviewer asks us that whether you have got a good command on presentation skills or not. You know why? Because presentation skill is a life skill, I believe, and it helps you grow your business, it helps you operate your business in an efficient manner. It is one of the best communication tool that you can use before your stakeholders, before your employees, or before anyone, to present your idea in a better form. There are many types of presentation, but we will discuss some of the main important. Number one, informative presentation. As the name is so quite self-explanatory, that you share information to anyone. It's more like an educational kind of presentation, and we can present our product or any good or any service before the audience. अब हम बात करते हैं नंबर टू, instructive presentation. It goes beyond sharing facts. Instructive presentation is more like an instruction that you are presenting to your audience, and you want them to do that thing later on. For example, trainings हो गई and procedures, the webinars, या for example कोई machine operation है तो उसके हवाले से आप presentation दे रहे हैं, and you want your employees to apply those all instructions in their work. Now the third type, persuasive presentation, one of my favorite presentation, literally. Have you ever been to any mobile shop to buy a mobile? क्या होता है वहाँ पे? वो मोबाइल वाला जो होता है वो आपसे पहले आपका बजट पूछेगा, एंड देन फिर मोबाइल के ब्रांड वगैरह पूछेगा, लेकिन उसने प्रेजेंट वही मोबाइल करना है जो उसको सेल करना है, राइट? एंड दैट should be an expensive kind of a mobile. अब वो इतने अच्छी तरीके से उसको आपको persuade करेगा और इतने अच्छी तरीके से उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेगा in a form that you will think that यार यही था मोबाइल जिसकी मुझे थी तलाश और मैं बिल्कुल सही दुकान पर हूँ और this mobile has all the world's features and I should buy it. And eventually what do? You buy that mobile. So that's called persuasive presentation. किसी को किसी चीज को करने के लिए या फिर किसी चीज को लेने के लिए कायल करना, basically. Now here we have the very important type of presentation, that is called pair presentation. Pair means two. So you must have heard about shoes pair या curtains pair. So pair means two. Like two persons are presenting one presentation. So in this one, here are some tips. Gather the material together, rehearse together, and let your member have his own part, and you should know what he's going to share before the audience, so that in the absence of him, so aap present kar lijiye, and do encourage your presentation partner whenever he loses his confidence. Now let's jump up to the elements of presentation, and they are also called as the do's of presentation. Like these are the things जो कि आपको add करनी चाहिए अपनी presentation के अंदर, right? So let's go and look at them one by one. Number one, which is very important, set goals and your objectives of your presentation and understand the audience. जी बिल्कुल, क्या प्रेजेंट करना है, कितना प्रेजेंट करना है और किसको प्रेजेंट करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी के घर पे मेहमान जाते हैं, राइट? तो मेहमान के तौर पे आप जा रहे हैं, यू वर्क बिफोर गोइंग टू देयर प्लेस दैट व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर देयर, एंड वो कहाँ रहते हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. सिमिलरली आपने ऑडियंस को भी परखना होता है कि आपकी ऑडियंस किस किस्म की है. इंजीनियरिंग के बंदे को आप बिजनेस का या फिर मेडिकल के कोई टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन देंगे, so that will be beyond his level of understanding and level of interest as well. So you should clearly set your goals and understand your audience, that what kind of audience you are going to face. Now let's talk about number two. Familiarize yourself with the venue and equipment. Why?
You must visit the place where you need to present your presentation before 2 days or at least 1 day. Why? क्योंकि आपकी जो प्लेस है वो बहुत मैटर करती है आपको कंफर्टेबल सिचुएशन देने के लिए या फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशन देने के लिए। आप अगर उस प्लेस पे जाके एक दिन पहले ही विजिट कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार यहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई है, ठीक है, आई नीड टू प्रेजेंट माई आइडिया बिफोर द ऑडियंस लाइक दिस एंड डू आई नीड माइक और नॉट, और इक्विपमेंट स्लाइड चेंजिंग का क्या होगा भाई, रिमोट हो गया फिर आप लोग खुद ही करेंगे, what will be the scenario। so उस सूरत के अंदर आपको पता चल जाता है कि अच्छा यार मेरी प्रेजेंटेशन का फ्लो इस तरीके से जाएगा। नंबर 3, start with a story or unfathomable question। now unfathomable question means the question which is yet to be answered or the question जिसको अभी एक्सप्लोर मुकम्मल तौर पे नहीं किया गया है। फॉर एग्जांपल आप इस तरह के क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए ताकि ऑडियंस को थोड़ा सा जागने का मौका मिले शुरू से ही और इंटरेस्टिंग बने आपकी प्रेजेंटेशन के। दैट will there be any cure for cancer, do you think, like this। ठीक है, या फिर स्टोरी से स्टार्ट करें। भाई हम इंसानी फितरत है, राइट, हम अपना काम छोड़ के बाकी सबका काम कर रहे होते हैं, राइट, और हमें अपने मामलात का नहीं पता होता लेकिन दूसरों के मामलात को जानने का बड़ा शौक होता है, राइट। तो अगर आप किसी रियल सिनेरियो से या फिर रियल सिचुएशन से अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं, लाइक a year ago I was working with the so and so person and he was dealing with a customer like this and I learned about this, इस तरीके से कोई एक स्टोरी बयान करिए ताकि लोगों का इंटरेस्ट शुरू से ही आ जाए। नंबर 4 which is very important, design simply and use minimalistic colors। देखिए आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल दे जस्ट डाउनलोड द टेम्पलेट्स फ्रॉम इंटरनेट और समटाइम्स द होल प्रेजेंटेशंस फ्रॉम स्लाइड शेयर एंड दे प्रेजेंट बिफोर द ऑडियंस, और डिज़ाइन जो है वो ऐसे करके जा रहा है और यहीं पर ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो डिज़ाइन के ऊपर ही टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट नजर ही नहीं आ रहा। यूज कम से कम कलर्स। वाई एम आई टेलिंग यू? क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन लगनी चाहिए, ऑडियंस को गोला गंडा नहीं चाहिए, राइट। सो यूज 2 कलर्स मिनिमम, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक वाइट कलर का बैकग्राउंड है उसके ऊपर कंट्रास्ट दे दिया आपने ब्लू इन कलर से एंड यू मेड योर प्रेजेंटेशन, होल प्रेजेंटेशन ऑन दैट, और एक ही डिजाइन के ऊपर प्रेजेंटेशन चल रही हो, सो दैट शुड बी इन योर प्रेजेंटेशन। Number 5, audience immersion। Very, very important aspect of your presentation while you are presenting your presentation। ऑडियंस अगर आपकी जाग रही है और सुन रही है आपको, इट मीन्स कि आप अच्छी प्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर आपकी ऑडियंस सो रही है सो इट मीन्स कि आप अच्छा प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। उस सूरत के अंदर आपके पास बैकअप के लिए कोई प्लान्स होने चाहिए, एक्टिविटी प्लान करके रखिए या फिर कोई इल्यूजन की पिक्चर्स लगा दीजिए और उसमें पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व हो जाएगी ऑडियंस की कि भाई 20 सेकंड्स के अंदर आपने ये चीज़ें ढूंढनी है, या कोई रिसर्च आप लेकर आ जाइए या फिर कोई ऐसी स्टोरी लेकर आ जाइए बीच में। सो यू नो make your presentation effective and involve your audience into that। Let's talk about number 6, animations and transitions। Transitions हर स्लाइड के ऊपर की जाती है और एनिमेशन जो होती है वो टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट या पिक्चर्स के ऊपर की जाती है। ट्रांजिशन के इफेक्ट्स को अगर आप डाल रहे हैं स्लाइड्स के अंदर, सो प्लीज मेक श्योर दैट कि इट शुड बी वन एंड ओनली, राइट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल बहुत सारे इफेक्ट्स डाल दिए, हर स्लाइड जो है वो अलग अलग तरीके से वो अपेयर हो रही है, इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड। एंड एनिमेशंस, आई शुड से अवॉइड एनिमेशंस बिकॉज समटाइम्स वो टेक्स्ट जो है ना वो ऐसे 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 करके यूँ आ रहा होता है, राइट, इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड, ठीक है। या अगर आप एनिमेशन कर रहे हैं सो इट शुड बी डिसेंट। Number 7, use HD pictures and videos। Make sure कि आपकी presentation इमेज बेस्ड होनी चाहिए। अगर कोई टेक्स्ट नहीं भी पढ़े तो उसको पिक्चर से समझ में आ जाए कि अच्छा यहाँ पर क्या बात हो रही है। नंबर 2, यू शुड यूज HD वीडियोस, हाई डेफिनेशन वीडियोस। पिक्चर्स के ऊपर वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, पिक्चर्स ब्लर नहीं होनी चाहिए, पिक्चर शुड बी शार्प इनफ। और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि हाउ टू मेक योर प्रेजेंटेशन इन इजी 4 स्टेप्स, सो यू मस्ट गो चेक दैट आउट। I'll provide you the link in the description box of this video so that you can have complete idea how to make presentation। Number 8, which is very, very important, I must say, maintain eye contact and deliver it confidently। Present your presentation like a king। आप अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन करके रखिए ऑडियंस के साथ। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप गलत बोल रहे हैं या तो फिर कुछ छुपा रहे हैं, ऐसे ही बैठ जाता है ऑडियंस को। Opposite gender respect is something very different, but while you are presenting your presentation, you should maintain eye contact। Confidence कैसे आएगा? While we are giving presentation, we should put a nice smile on our face। Smile makes you confident।
Number 9, connect your verbal communication to your non-verbal communication. It means कि जो आप बात कर रहे हैं वही बात आपके hand gestures से आपके facial expression से show होनी चाहिए. You know what the fact is? 70% you talk by your facial expressions and by your gestures. Number 10, rehearse a lot and give your presentation within time limit. देखिए रिहर्स अलॉट का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग दे कम टू मी एंड दे आस्क मी सर हमें स्टेज फोबिया है, वहाँ पर जाके नर्वस हो जाते हैं एंड ऑल दैट. देखिए स्टेज फोबिया शोबिया कुछ नहीं होता है, यू जस्ट नीड प्रैक्टिस. पहले शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए, लुक योर सेल्फ हाउ यू आर डिलीवरिंग, एंड देन वो जो हमारी ज़िंदगी के अंदर 4 लोग हैं ना उनको बिठा दीजिए, राइट, और उनके क्रिटिक जो होता है ना वो आप क्रिटिकल व्यूज दीजिए और फिर अपने आप को आप इम्प्रूव कीजिए, राइट. एंड गिव योर प्रेजेंटेशन विद इन टाइम लिमिट मीन्स के टाइम के चक्कर में भागना भी नहीं है कि भाई हमें टाइम कम मिला हुआ या फिर टाइम खत्म हो जाएगा मुझे जल्दी अपना प्रेजेंटेशन देनी है. नो, जस्ट रिलैक्स and put your nice efforts into that and deliver your presentation nicely and calmly. I just recall, have you listened to Dr. Arfa Sayyida Zahra? Go, must check that out. How graceful she is और कैसा पुरसुकून लहजा है उनका बात को बयान करने का. So please, you will learn a lot. Number 11 point states that you should plan some activity for your audience. बिल्कुल audience को अपने साथ रखना और उनको जगाए रखना मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे बड़ा और मुश्किल काम है, right? So you should have some activities for your audience. और for example like हमारे news channels हैं वो भी रोज़ाना मसाला तड़का वगैरह लगा के हमें न्यूज़ दे रहे होते हैं. अगर कभी न्यूज़ नहीं भी होती तो वो खुद ही बना लेते हैं बैठे बैठे. लास्ट पॉइंट नंबर 12, provide the summary of your presentation to your audience which they should take home. बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन के अख्ताम पे उनको प्रिंट आउट या फिर कोई एक समरी आप उनको मेल कर दीजिए सो दैट दे कैन हैव समथिंग टू टेक देयर होम. और अगर यहाँ पे कुछ नहीं उन्होंने समझा तो वो वहाँ पर बाद में जाके समझ लेंगे, राइट. इट विल हेल्प देम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम डोंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन. नंबर 1, डोंट रीड योर प्रेजेंटेशन एट ऑल. प्लीज, ऑडियंस चाहती है कि आप प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कीजिए, रीड तो वो खुद भी कर लेंगे. Number 2 don't states that don't speak with a too low or monotonous voice. देखिए बाज़ औक़ात आपको अपनी आवाज़ के अंदर इंटोनेशन लेकर आनी होती है यानी कि उतार चढ़ाव, राइट. whenever there is a very highlighted point जिसको आपने emphasize करना है, you should loud your voice on that so that audience can hear it, right. Number 3, do not forget backup slides. I've seen a lot of people, they come to present their presentation and they don't have their presentation with themselves. They just bring this sort of, little USB kind of. Who uses USB in this era? When you know that sometimes it is not safe to save in your USB. So you should not use it. You should have your presentation in your drive, in your email, in your mobile, in your USB. तो 4 या 5 चीज़ों के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को डाल के लेकर आइए कि अगर कोई एक चीज़ नहीं भी अगर काम करे तो दूसरी चीज़ से आप अपना काम चला लें. Number 4, do not add text in your presentation. Too much text in your presentation. Just bullet points होने चाहिए, पैराग्राफ्स आपने ऐड नहीं करने, पैराग्राफ्स तो आपने प्रेजेंट करने हैं. Number 5, do not stand before projector light. Why am I saying is that कि जब भी आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं और बीच में अगर प्रोजेक्टर की लाइट से गुजरते हैं सो वो पीछे इतना बड़ा साया आपका आ जाता है और ऑडियंस डर जाती है, वो कहती है ये पीछे कौन सी मखलूक है. So better just stand at one place, or if you are passing, so make sure that you are not trespassing the projector light basically. Number 6, don't use so many colors, as I told you earlier that your presentation should be decent one. Number 7, do not pause. Pause तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए बिल्कुल भी नहीं होना है. जहां पे आप थोड़ी देर के लिए पॉज हुए, आप कोई चीज़ भूले, कंफ्यूज हुए, आपके ऑडियंस को फौरन पता चल जाता है और वो आपके हाथ से निकल जाती है. सो यू लूज देयर अटेंशन. सो डू नॉट पॉज एट ऑल. स्लाइड चेंज करने के लिए भी प्लीज यू शुड हैव रिमोट or you should have some use some transitions while you are going to change your slide. Number 8, the last one, do not dress up yourself informal. Boys can wear their nice kameez shalwar or pants and shirt and coat and tie, and girls always graceful whenever they wear something decent from their decent collection. Now to add your audio visual aid, AV8 भी कहलाते हैं, I have made a different video on how to make presentation in 4 easy steps. I'll provide you the link in the description box of this video. Go check that out. It will be very helpful, trust me.
So this was all for today's video lesson. I hope it was cleared and it was helpful for you. And thank you for being with me for such a long time. So like this video, share it with your friends and colleagues, and subscribe to Infomercial.